क्या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर लॉन्ग लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं पर अब कुछ भी उसमें से याद नहीं? तो ये आज का वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ हाउ टू यूज एआई एज योर पर्सनलाइज्ड टीचर, doubt solver and revision partner. Smart students are using AI like ChatGPT, Perplexity, Claude for their revision, for their test and for doubt solving, and that is why they are scoring good marks in exam. But problem क्या है कि 90% स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता कि इन एआई को हम अपने स्टडीज में कैसे यूज कर सकते हैं. बट one most important thing every CA student should keep in mind while using the AI, the important mistake they need to avoid while studying CA course with AI. So be there till end. I will help you कि ये 4 चीज मत करना, तो अपने आप आपका एआई आपका टीचर एंड स्टडी पार्टनर बन सकता है. पार्ट 1, यूज एआई एज अ पर्सनल टीचर फॉर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग. कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 2 hours, let's open ChatGPT and learn from it. So उसमें एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालो और आपको वो प्रॉपर एक्सप्लेन करके देगा. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. ये एक चैट जीपीटी का टैब है, एंड सेम वे यू कैन ओपन फॉर क्लाउड एआई. आई जस्ट ओपन फॉर यू क्लाउड एआई फॉर फ्री, एंड हियर यू ऑल्सो कैन सी चैट जीपीटी cloud AI, but cloud AI is this one, not this one, which is in of orange color. You can open here. It will look like this. Somebody has signed it with उत्कर्ष, so यहाँ पर उत्कर्ष नजर आएगा. अगर मैंने यहाँ पर शिल्पी से किया हुआ है तो शिल्पी नजर आएगा. whichever login you are using from Gmail, आपको वो नजर आएगा. ठीक है. Now what you can do, आप यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डालोगे कि explain me accounting standard 12 or maybe 2 of CA intermediate in very simple language, as if I am 15 years old. ठीक है. एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, ऐसा हम बोल रहे हैं. So see how he will explain it. ChatGPT आपको ब्लूप्रिंट्स दे रहा है. What they are giving you the blueprint. What is AS2? इन्वेंटरी के बारे में है. What are the main rules? What does it mean? NRV. Okay. Then final value कैसे निकालेंगे? Why lower value? It will explain with all the reasoning, cost formula, weighted average, simple real life examples. In one line हम उसको क्या बोलेंगे? आपको मेमोरी टेक्निक देगा वो. And if you want, I can give you MCQ for exam question or make notes for revision. So we can focus on notes. ये एक हो गया teaching part. Still if your not concepts are not clear, then आप क्या कर सकते हो? वो point लिखो और उसको बोलो explain me in phases. मतलब धीरे धीरे आपको वो explain करेगा. अगर आपको concept clarity हो गई, you want some revision notes type of thing, तो मैं इसी को टाइप करूंगी. यस, गिव मी रिविजन नोट, सो दैट आपको बनाना नहीं पड़ेगा. आप लिख सकते हो मेक अ नोट्स फॉर रिविजन विच आई कैन यूज 1 day बिफोर एग्जाम. ठीक है. इसमें अगर आपके पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि आई वॉन्ट 1 पेजर रिविजन नोट, समथिंग लाइक दैट. सो अगर इन्होंने रिविजन नोट्स बनाया है, देखो क्या क्या कॉस्ट लेना है फॉर द परचेज, फॉर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट कौन से इंक्लूड नहीं करना है, एनआरबी. ये रिविजन नोट्स जो हम जनरली बनाते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हो. आप इसको छोटा बनाओ, 1 पेजर नोट्स बनाओ, एवरीथिंग. नाउ this is what is about AI is teaching you. You can ask AI to give me explanation or teach me in phases. In phase 1, give me introduction. Phase 2, give me this.
ओके तो ये आपका एक पर्सनलाइज टीचर के जैसा बिहेव करेगा. एंड सेम यू कैन पुट इन same thing if you want, you can put in cloud. This is again one thing that you can use. So I can put over here ChatGPT is very in general. Cloud is more analyzed and specific. काफी research के बाद ये आपको proper explanation देगा, but it will take time to give you all the output. ये देखो आपको पहले वो एग्जाम्पल से समझा रहा है कि इमेजिन यू रन अ स्मॉल बिजनेस सेलिंग वाटर बोतल. ये पूरा एक्सप्लेन है एंड दिस एंटायर प्रॉब्लम AS2 is trying to solve. तो ये पूरा आपको बेस से बता रहा है. LIFO method, FIFO method, everything is done, still working. You can see this icon. ये इसका मतलब है कि still working है. And last में जब ये बंद हो गया, this means this is that's genuinely all AS2. Everything else in the standard is just elaborating this same idea. मतलब पूरे स्टैंडर्ड में बार बार ये दिया, इसने आपको बहुत शॉर्ट में एंड क्विकली एक्सप्लेन कर दिया है. recap. This first phase will help you as your personalized teacher, even though you have not taken any lectures, outside faculty lectures. Okay, so in end you will be getting a simple examples, simple real life examples, step by step clarity. So AI, first step, AI you can use as a personalized teacher. Now part 2, where you can use AI as a doubt solver. अभी यहाँ पर क्या होता है कि हमें पूरा चैप्टर पता है लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमको डाउट आ रहा है एंड यू हैव नो टीचर अवेलेबल. ओके सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस AI as your doubt solver, where you can ask all the question which is coming into your mind and they will give you suggestion. At the same time you have to track your own study module so that जो AI बोल रहा है, जो study module में दे रहा है, some relation should be there. वैसे concepts change नहीं होते हैं लेकिन फिर भी आप cross check करते रहना. So let's see how AI can be used as our doubt solver. Let's go to ChatGPT and I want to understand what do you mean by NRB and what is the basics, how to calculate. So मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, so मैं यहाँ लिखती हूँ what, प्लीज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. सो बेसिकली ये आपका एक स्टडी पार्टनर है, एक टीचर है जिसके संग आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हो. आप उस पर चिल्ला सकते हो, आप उसको प्यार से बात कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा. बेस्ट पार्ट है ये. ओके सो लेट्स गो, वी सी दैट हाउ इट्स एक्सप्लेनिंग. So you're under very simple. It is giving you an example. NRV is a money you actually get after selling the product. Not just selling, we subtract extra cost also. अब इन्होंने क्या simple example दिया है. You have a chocolate box. Selling price is 100. Selling expense is 10. So NRV is 90. So even though you sell at 100, you actually get 90. So ये एक net realizable value और ये आपको explain कर रहा है with a real example. Okay, so here you can use AI for a doubt solving. So you have to use very specific prompt. Explain me in detail, explain me with example, explain me in step by step process. Okay, explain me with the help of formula. And even here you can also ask AI from ICA exam point of view, what common mistake I can avoid. तो ये भी आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा. And trust me student, this is gold. क्योंकि आप सिर्फ आंसर ही नहीं, आपको सब एग्जाम में माइंडसेट भी आपका प्रिपेयर कर रहा है. So this is the best thing that students use as a doubt solver, even though you don't have any buddies or teachers around. Part 3, your practice machine. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, डाउट सॉल्विंग भी हो जाती है, पर प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं एंड उसके वजह से स्कोर काफी कम आता है. एंड समटाइम्स दे फील कि प्रैक्टिस करने के लिए बुक खरीदना होगा और मे बी XYZ लेक्चरर मतलब फैकल्टीज का बुक खोजने में उनको टाइम लग जाता है और उनके कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है. सो हियर ही कम्स योर प्रैक्टिस मशीन. यू कैन यूज AI for practicing lot of MCQ, lot of
case based study, and even ICI based questions also. So let's understand how you can do that. So here I can give you, for example, I have cleared my doubt. Now I am giving a prompt like here, give me 10 MCQ on this topic. This topic matlab, this topic is in continuity. Matlab, you can ask for maybe AS2, AS12, EPS, anything, or maybe salary, PGBP. कुछ भी टॉपिक ले लो, लेकिन टॉपिक प्रॉपर डालो. और मैं इसी दिस टॉपिक इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वी आर इन कंटिन्यूटी. तो हम इसमें विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन दोनों चीज हम इनसे मांगेंगे 10 MCQs. इसमें एक और प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हो लास्ट में कि गिव आंसर एंड एक्सप्लेनेशन एट द लास्ट. सो इट विल बी लाइक अ टेस्ट. ओके, तो आपको ये एमसीक्यू भी मिल गया, आप एंड में उसका आंसर भी देख सकते हो. इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेस्ट. बट अगर मैंने ये प्रॉम्प्ट को ठीक से नहीं डाला तो ये मुझे साथ साथ में आंसर दे देगा. यू कैन सी दैट एनआरवी मीन्स व्हाट, तो आंसर तुरंत आपको दे दिया है. फिर इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट दिस. ठीक है, अब मैंने यही प्रॉम्प्ट को वापस से उठाकर व्हाट आई विल डू, आई विल पेस्ट ओवर हियर एंड यहां पर क्लियरली लिखूंगी गिव मी 5 MCQ, 5 केस बेस्ड MCQ. व्हाई आई एम टेलिंग, बिकॉज अभी थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. बेस्ड MCQ with on this with answer and explanation at the end. Okay, so मैंने इनसे एंड में मांगा ये चीज. तो let's see how they will provide me. This icon shows ये वर्किंग है. जैसे ये आइकॉन चेंज हो गया, so this means you can proceed. So you can see मैंने एक एग्जाम्पल मांगा, उन्होंने एक सिनेरियो दिया और उसके ऊपर ABC दिया. आंसर नहीं दिया बिकॉज मैंने प्रॉम्प्ट करेक्टली डाला. फिर यू कैन सी ओवर हियर, ओके, थर्ड you can see over here, fourth, okay, fifth, and at the end answer and its explanation is given. So ये टेस्ट के जैसा आप अपने सेल्फ टेस्ट के जैसा ले सकते हैं. यू विल फाइंड एज अ पार्टनर कि जब भी आपको मन हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन चाहिए तो वो दे देगा, 10 क्वेश्चन चाहिए तो दे देगा, लेकिन इंश्योर करना कि आपका स्टडी मटेरियल और इनके आंसर्स और इनके कॉन्सेप्ट्स दोनों मैच होते हुए जा रहे हैं. Okay, so you can see this icon has been changed over here. Got it? Part number 4. We will use this AI as your revision partner. रिविजन समटाइम्स बोरिंग लगता है और बार बार करना भी मतलब ऐसा लगता है कि हम उसको उठाए नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हमने उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है डीपली, ऑलरेडी हम उसके ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके हैं. बट व्हाई टू रिवाइज? बट ऐसा नहीं होता है. सीए में आपको बार बार रिविजन जरूरी होती है. तो इन दैट केस यू कैन यूज एआई लाइक ChatGPT, Perplexity, Claude फॉर द रिविजन. तो यू कैन गिव द प्रॉम्प्ट लाइक समराइज अ चैप्टर इन बुलेट पॉइंट्स. कोई भी टॉपिक दे दो, लॉ का दे दो, ऑडिट का दे दो, उनको बोलो इसको समराइज कर दो बुलेट पॉइंट यूजिंग द कीवर्ड्स. एंड you can also ask them to make a flow chart so that you can revise in the last day of the exam. You can also ask for theory topics ki mnemonics de do so that I can read and revise, or you can ask for some memory technique also. So ये कैसा है, ये एक आपके लिए revision partner के जैसा work करेगा and you need to focus on that. So let's try once in as a revision partner because it is going to save you many hours of revision. Okay, so what prompt I will give for this AS2? Okay, very simple. Let's see बना के कैसा देता है. Even I don't know, but definitely some output will be there. इससे better आपको cloud में मिलेगा. So you can see it's preparing ultra short technique, extra minimal. Start. Do you have inventory? Yes. Continue. मतलब ये फ्लो चार्ट जैसे फॉर्म में वो बना के दे रहा है आपको एट द एंड. ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा मिनी फ्लो इट्स गिवन ओवर हियर. तो वो पीडीएफ बना के दूं कि नहीं दूं ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन गो एंड यू कैन डू द सेम एनालिसिस इन परप्लेक्सिटी एंड ऑल्सो एट द क्लाउड.
Okay, so this is how you need to work. Next is, now you have already understood how to use AI like ChatGPT, Perplexity, Cloud as your personalized teacher, personalized doubt solver, personalized practice machine. But now what important thing you need to take care before using this type of AI? देखो क्या होता है, स्टूडेंट आंख बंद करके यूज करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं और पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एआई पे, विच इज वेरी रॉन्ग. ठीक है, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आंसर एआई इज गिवन, हमें क्या लेना है एंड हाउ आवर इंस्टीट्यूट इज आस्किंग द क्वेश्चंस. सो एआई आपका, यू कैन ट्रीट इट एज अ सर्वेंट, टीचर नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए एक क्रॉस चेक करना आपको बहुत जरूरी है कि आपके स्टडी मटेरियल में क्या दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट किस पैटर्न का आंसर मांग रहा है, वो आपको रेट करना होगा. Sometimes important points are already given in our module, ICI module, which AI don't understand. तो better है आप उसको जस्ट एक अपना रिविजन पार्टनर के जैसा यूज करो. एक पार्टनर रहना चाहिए, बट मेन एंड एवरीथिंग फॉर अस इज आवर ICI module. One important thing I would like to give you, which I forgot, कि आप हर AI में अपना PDF अपलोड कर सकते हो. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डू दैट. इस PDF को यहां से अगर आप देख सकते हो तो यहां से डाउनलोड करूंगी. I will save this PDF in my desktop. You can see over here. तो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया. Now I'll go to AI. यहाँ पर मैं प्लस साइन जो आप देख रहे हो, you can upload your reference module over here. You can see it is being uploaded. It is showing this sign. Now you can use the same prompt what you have used earlier for practicing, for memory technique, and for doubt solving. यूज दिस एज अ बेस और फिर आप अपना प्रोसीड. फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन मी, तो मैंने ये बोल दिया कि इस PDF को यूज करते हुए मुझे एक्सप्लेन करो. दिस इज हाउ एक्चुअली वर्क्स. मतलब इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि आपके PDF को यूज करते करते वो आपको एक्सप्लेन करेगा. अगर आप जेन्युइनली AI को यूज करके अपने स्टडी स्पीड को 2x 3x जितना बढ़ाना चाहते हो, देन यूज एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट. ओके, बट डोंट फॉरगेट AI आपको पढ़ने में एंड डाउट सॉल्विंग में हेल्प करेगा, बट आपके रिवीजन स्ट्रैटेजी, आपका डेली रूटीन, आपकी हैंड होल्डिंग and everything that AI will not do. Don't worry. If you still stuck and you're not able to plan your own day, own routine for the exam, and you want hand holding and proper roadmap for completing the CA journey, then do join my one-on-one mentorship where I can explain you everything as per your requirement. Every details are given in the description box. So अगर आप अपने CA journey की तरफ serious ho, then don't miss this opportunity.